तो आज हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। अब टर्मिनल वेलोसिटी वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे एक बॉडी फ्रीली फॉल करती है एक लिक्विड में या फ्लूइड में। अब पहले जब उस बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो हम उसको लेट करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है उस टाइम जो एक्सेलरेशन है वो होता है मैक्सिमम। अब धीरे धीरे जब वो ट्रैवल करता है फ्लूइड में तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होता है। एक पॉइंट पे उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 0 और उसका जो वेलोसिटी अटेंड है वो होता है मैक्सिमम। दैट कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। अब यह है कि उसका एक्सेलरेशन क्यों 0 होता है। अब एक्सेलरेशन बॉडी का 0 तब होगा एज पर न्यूटन सेकंड लॉ जब उस पे जो टोटल फोर्स होगा वो होगा किसके बराबर, 0 के बराबर। अब जैसा कि इस फिगर में एविडेंट है, जब एक बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं या एक बॉडी को हम लेट करते हैं इनटू द फ्लूइड विद u इज इक्वल टू 0 तो जो डाउनवर्ड फोर्स होता है वो होता है उस बॉडी का वेट। अब जब वो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को अगर हम ध्यान में रखें, जब हम उस बॉडी को लेट करेंगे फ्लूइड में तो वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, रेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उतना अप थ्रस्ट होगा ऊपर की ओर। एज पर स्टोक्स लॉ जो विस्कस ड्रैग फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो अपोज करता है मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ फ्लूइड। इट इज जस्ट लाइक द फ्रिक्शन व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सॉलिड्स। तो उसको हम विस्कस ड्रैग कहते हैं। वो विस्कस ड्रैग फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा। अब जब ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को जो हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, तो इसका मतलब ये है जो टोटल फोर्स होगा वो होगा बराबर 0 के। अब डाउनवर्ड फोर्स जो इस बॉडी पे है वो है वेट ऑफ द बॉडी। अपवर्ड फोर्सेस दो है, एक है अप थ्रस्ट और एफ। अब चूंकि ये मैक्सिमम कांस्टेंट अटेन्ड वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0 के बराबर है, तो जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो होगा अपवर्ड फोर्स। तो जो टोटल फोर्स होगा समेशन ऑफ एफ ऑन दैट बॉडी दैट विल बी इक्वल टू 0। फ्रॉम दैट वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज इजी। ओके, सो W weight of the body will be equal to m into g, while g is the gravitational acceleration या acceleration due to gravity। तो जो m होगा मास ऑफ बॉडी किसके बराबर होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो। सो W will be equal to 4/3 पाई r क्यूब रो इनटू g। Similarly, the weight of liquid displaced U will be equal to 4/3 pi r cube into sigma, where sigma is the density of the fluid, into g, and as per Stokes law F is equal to 6 pi neta rv। तो टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ये है, जो W है weight that is vertically downwards, that will be equal to up thrust plus viscous drag force F। And from this equation we will calculate the equation of the terminal velocity, and that should be easy. Continuing, weight of the body will be equal to 4/3 pi r cube into rho into g, that will be equal to 4/3 pi r cube into sigma into g plus 6 pi neta r v, where v is its terminal velocity. So 6 pi neta rv will be equal to 4/3 pi r cube को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। दैट इज जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। सो v will be equal to 4/3 pi r cube रो माइनस सिग्मा इंटू जी divided by 6 pi neta r, 6 pi neta and r. Now 1 r and 1 r goes, so we are left with square, r square. Pi and pi goes, and v is equal to 4 divided by 18 into r square rho minus sigma into g divided by neta. 2 2s are 4, 2 9s are 18. So the equation of terminal velocity v is equal to 2 divided by 9 r square rho minus sigma
into g divided by neta. Now, as we are done with the equation of the terminal velocity, v is equal to 2 by 9 r square rho minus sigma into g divided by neta. Now, we will discuss what information this equation furnishes. 2 by 9 is a constant, r is the radius of the body. Let us take it is a spherical body, and rho is its density of the material of the body, and sigma is the density of the medium. G is the acceleration due to gravity, and neta is the viscosity. Here 2 by 9 is constant, g is constant, so we will be discussing the variation with the density, with the coefficient of viscosity and the radius. So clearly, taking the radius, terminal velocity will be directly proportional to the square of the radius. So if we have to compare terminal velocities of two bodies, so v1 by v2 will be directly proportional to r1 square divided by r2 square. That means more is the radius of the body, more will be its terminal velocity. Now, the terminal velocity is inversely proportional coefficient of viscosity. More is the coefficient of viscosity, more will be the viscous drag, and less will be the terminal velocity. Now, if sigma is greater than rho, that means the density of the body is less than the density of the fluid. That means this terminal velocity will be negative. If the terminal velocity is negative, that means the body will go upwards. That is why an air bubble rises up in a liquid. Let us discuss the last point, that is variation of velocity with distance. As we know, we let a body with zero initial velocity and the acceleration at that point is maximum, then the acceleration goes on decreasing and the velocity goes on increasing up to a point where it is maximum constant value. That maximum constant value is called as terminal velocity. So the variation of velocity with distance should be like this. It increases and then becomes constant. It increases initially and then becomes constant. This value of constant velocity is called as terminal velocity.